Okay, we are live. Hello, good evening. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are back with another Hindu analysis, and today we are also going to have a Menti quiz. How many of you are here with me today? Can I get some responses in the chat box, please? Responses in the chat box if you are here. Okay, Divij is here, Vinish is here. Good evening, guys. Adrija is here. Let's wait for a few more seconds. Let more people join us. We'll start in a minute. Jasmeet is here. Good evening. Mishika is here. Good evening. Very good evening to all of you. अच्छा हाँ आज एक और स्पेशल अनाउंसमेंट we have a special session today at 8 p.m. on the final strategy for 2 months to CLAT. Now that 2 months, less than 2 months are left for CLAT. So what should be your strategy with respect to the last 55, 56 days? We'll be having a comprehensive discussion on that today, 8 p.m. live on our channel. Me along with Amitendu sir. Mishika is here, Riddhi is here, Aratna is here, Alankrita is here. Very good evening, guys. Welcome back to the class. So आज मेंटी क्विज करेंगे एंड थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी ले लेंगे उससे पहले न्यूज़पेपर का सो दैट वी कवर अवर न्यूज़पेपर एज वेल एज डू द मेंटी क्विज. ठीक है, चलो. आर यू गाइस रेडी टू स्टार्ट? Are we ready to start? Can I get a ready in the chat box if everyone is ready to start? Payal is here. Good evening, Payal. Dhriti is here. What's today's Menti topic? Menti topic for the day is revision for the month of March, as previously discussed. April मैंने नहीं डाला because most of you are requesting कि March पे ही रखो उसको. So it's based on the month of March. 15 odd questions. Not a very long quiz today. Okay, everyone is ready. Iptakshi is here. Good evening. Chalo, theek hai, let's start. What is the agenda for the day? Firstly, we'll be doing our newspaper overview. So I'll just take a quick glance over the important news of the day. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं आज. There are a couple of Supreme Court judgments and legal related news. We'll look at that. Then we have our vocabulary. Then we have our Menti quiz and the announcement, the special session today at 8 p.m. for 2 months to CLAT. So make sure you have your reminders in place. Make sure you do not miss this particular session. ठीक है, चलो. Let's start our newspaper analysis. I'll share the newspaper directly and we'll go there. Okay. So I hope the newspaper is visible to everyone. Menti quiz topic is revision for the month of March. Menti quiz का मैं कोड दे दूंगा आपको. Let's get an overview of the newspaper and then let's move to Menti quiz. So the first news for the day is caste bias and segregation in prisons being in violation of dignity of those inmates. That is what the Supreme Court has said. Now, why has the Supreme Court made this particular statement? That is because, as per recent reports, a lot of discrimination is happening with people of certain caste, and they are being allocated certain roles or certain tasks, which is demeaning in nature, or which you could say are restricted to those category of people or those caste of people. So जैसे अगर कोई साफ सफाई वाला है तो वो पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं. अगर कोई जैसे क्लीनिंग वगैरह वाला है, क्लीनिंग और साफ सफाई तो सेम ही होता है. और भी जैसे अलग अलग टास्क हैं, जैसे खाना बनाने का है तो देयर इज सम कास्ट फॉर दैट. इफ देयर इज स्यूइंग और टेलरिंग देयर इज सम कास्ट फॉर दैट. सो ये कास्ट एक तरीके से बायस है वहां पे कि ये वाली कास्ट के लोग ये वाला प्रोफेशन करेंगे, ये वाली कास्ट के लोग ये वाली चीजें करेंगे इन प्रिजन्स, एंड दैट इज वायलेटिव ऑफ the dignity of those people and also violative of fundamental rights. कौन सा fundamental right violate हो रहा है यहाँ पे? Which article am I talking about? Which article talks about right against discrimination? Which fundamental right? Can you tell me the article in the chat box very quickly? जो prisons govern होते हैं ना, those are governed by certain prison manuals or prison rules, and Supreme Court ने बोला है कि they must be revised within 3 months. जो अभी existing prison manuals हैं, prison rules हैं, जेल के rules हैं, वो सारे रिवाइज होने चाहिए within 3 months, and ये discrimination वाला aspect हट जाना चाहिए. Article 15 and the precise answer is 15 clause 1. Absolutely सही जवाब.
वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, इसमें एक कीवर्ड जो है आपको पता होना चाहिए, विच इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे व्हेन द लीगल सिस्टम वाज मेड, दे हैड डिनोटेड a few tribes, a few communities as habitual offenders, that these are the tribes, these are the castes which are often found to be committing crimes, so इनको हम एक अलग लिस्ट में डिमार्केट कर देते हैं एंड उनके लिए अलग प्रोविजंस हम बना देते हैं। तो ये जो लेजिस्लेशन था इसको हमने 1952 में रिपील कर दिया था बाय एन अमेंडमेंट, बट अभी भी उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। दो द ट्राइब्स विच हैव बीन डी नोटिफाइड मतलब उन लिस्ट से हटा दी गई एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स, बट स्टिल दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो यही सारा है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। Then there's another debate as to marital rape being punishable or not. Marital relations must be exempt from rape provisions. That is what the center has told the Supreme Court. Why has the center told this to Supreme Court? Because multiple reasons. First, it's very tough to track what happens within a private space. Secondly, this can lead to a lot of fake cases, false cases, and can really be detrimental to the fabric of marriage. That is what the center is saying. These are not my words. These are the words of what the central government has told the Supreme Court. उन्होंने बोला है the marriage as an institution is different from different type of relationships, and the word which they have used is sui generis. Sui generis का मतलब होता है one of a kind or unique. तो उन्होंने बोला है कि this can cause serious disturbances in the institution of marriage and would impact conjugal relationships. तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। अभी तक जो था, जो आईपीसी का प्रोविजन था 375 फॉर द प्रोविजन ऑफ रेप, उसमें एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन 2 फॉर मैरिटल रेप विच वाज नॉट पनिशेबल। तो इस पे काफी टाइम से डिबेट चल रही है, एंड लेट्स सी इफ मैरिटल रेप इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द न्यू बीएनएस और नॉट। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। दीज आर अगेन state based news, politics based news. Let's see if we have anything interesting here. Okay. Population in forest jumps by 22%. Very effective. I'll give you the gist of the article. What the article is saying. The article is saying that the rankings, especially Indian rankings, what are the rankings which are used to rank Indian universities? What is the name of the framework which we used? जिसमें IIT Madras got the top rank. Can you guys tell me the name of the framework in the chat box very quickly? What is the name of the framework which is used to rank Indian universities? NIRF. Absolutely correct. NIRF, which is the National Institutional Ranking Framework, and उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज आर रैंक। तो ओवरऑल इस बार आईआईटी मद्रास वाज द टॉपर, एंड अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वर रैंक्ड। अब यहाँ पे ये आर्टिकल क्रिटिसाइज करता है एनआईआरएफ रैंकिंग्स को एंड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज इन जनरल को भी, बिकॉज ही इज सेइंग दैट वी आर ओवर एम्फेसाइजिंग ऑन रिसर्च। तो उसमें काफी बेंचमार्क्स होते हैं फॉर गेटिंग दैट रैंकिंग, कि किसने कितनी रिसर्च करी, कितने कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करे, कितने पेपर्स पब्लिश करे, कितने एक्सपेरिमेंट्स करे, कितनी थ्योरीज दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ओवर एम्फेसिस ऑन रिसर्च इज समथिंग विच इज हार्मिंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज। एंड ये जो आर्टिकल के ऑथर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट एस स्वामीनाथन, इन्होंने बोला है कि टीचिंग पे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए rather than just focusing on research, over emphasizing on research. And he's saying just because teaching cannot be quantified, teaching cannot be measured in rankings, आप कैसे मेजर करोगे टीचिंग अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है? How do you quantify that or put that into numbers? That is a little tedious to do, है ना? तो उस वजह से these rankings are not a good indicator of how well we are progressing in our education system. तो he's saying कि we should create two tracks, एक separate track for research focused and one separate track for teaching focused sort of rankings और एक तरीके से parameters. तो ये सब इन्होंने बोला। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड मेंटरिंग क्या है, फैकल्टी मेंबर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, मैट्रिक सिस्टम कैसे बनाना चाहिए। द मैट्रिक फोकस सिस्टम हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन व्हिच इंप्लाइज एजुकेशन इज अ मार्केट रादर देन अ सिटीजंस राइट एंड स्टेट्स ड्यूटी। तो एक तरीके से जब आप रैंक करते हो चीज़ों को, यू आर टेकिंग अ वेरी अगेन मैट्रिक फोकस्ड अप्रोच व्हिच इज नॉट गुड फॉर एजुकेशन, जो कि एक बेसिक
नीड होनी चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए विच द गवर्नमेंट और द कंट्री शुड सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि मेरिट फोकस सिस्टम और मेरिटोक्रेसी विच विल बी मिस्टेकनली बिलीव सिनोनिमस विद मेरिट। ओके, मेट्रिकोक्रेसी, ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हम यूज कर रहे हैं मेट्रिकोक्रेसी, यानी कि मेट्रिक्स पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जबकि फोकस होना चाहिए मेरिटोक्रेसी से, which has created a situation which implies that education is a market rather than a citizen's right, and the state's duty. Knowledge is a commodity and not a means of becoming more humane. Students are customers instead of future citizens. This warped का मतलब होता है एक तरीके से illusioned, एक तरीके से एक बबल में फंसा होना। Ecosystem views academic rigor as detracting from the business of delivering product to customer. It kills creativity and enthusiasm to learn. तो यही सब है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है इसमें। ये वाला आर्टिकल है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड द रोल ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन से स्केड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ? ये जो है महाराष्ट्र के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में है ये आर्टिकल, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए। ये डॉट 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 क्यों आ रहा है भाई चैट बॉक्स में? Are you guys trying to ask me something? Okay, let's move ahead. वाई इटली मैटर्स टू इंडिया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंडिया के एम्बेसडर ऑफ इटली टू इंडिया ने लिखा है, एंटोनियो बर्तोली ने। नेवल प्रेजेंस की बात करी है, डिफेंस टाइज की बात करी है, पीपल टू पीपल टाइज की बात करी है, एंड पैरिसी द रेड सी की बात करी है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है, ये सारी चीजें। Should election commission ensure internal democracy in political parties? This is an interview, not very important for us. आई डोंट थिंक इसके अलावा आज कुछ है न्यूज़पेपर में। स्वच्छ भारत मिशन हम कल कर चुके हैं। इट स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014, इट हैज कंप्लीटेड 10 इयर्स। यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ स्टैट्स दिए हैं। इन्होंने बोला है कि इंडिया हैज 3000 लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स। लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स क्या होती हैं? वो डंप साइट जहाँ पे सालों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो एक तरीके से वेस्ट डंप साइट्स की लेगेसी बन गई है वो। पहले ये आउटस्कर्ट्स पे होती सिटीज के, बट अब क्योंकि सिटीज भी एक्सपैंड हो गई हैं तो वो सिटीज के थोड़ा अंदर आ गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं? Health hazards. What are the health hazards? Exposure to the emission from hazardous waste can irritate the mouth and throat. Inhaling methane can cause nausea, vomiting, loss of coordination, etc. स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया है कैसे its aim was to create open defecation free India by 2 October 2019. 150th बर्थ एनिवर्सरी जो होनी थी महात्मा गांधी की, बट उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड भी कर दिया था। फिर 2021 में हमने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया SBM अर्बन 2.0, जिसमें हम अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू ओपन डेफिकेशन फ्री और वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट डिस्पोजल की तरफ जा रहे थे। तो ये सब है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कल। नंबर्स हैं बस इसमें, ठीक है। चलो, लापता लेडीज गॉट अ शॉट एट ऑस्कर्स, ये आपको पता ही होगा। लापता लेडीज वाज इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन टू द एकेडमी अवार्ड्स, द ऑस्कर्स। चलो ठीक है। जयशंकर टू मीट डेसा नायके टुडे। डेसा नायके कौन है? हु इज डेसा नायके? श्रीलंका's new leader, AKD डेसा नायके, अनुराग कुमारा डेसा नायके। ठीक है, तो इनसे मिलेंगे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। ये देखो, ये बैठे हैं साथ में, गप्पे लड़ा रहे हैं, देखते हैं क्या बात होती है। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग है क्या आज न्यूज़पेपर में? और कुछ मुझे दिख तो नहीं रहा ऐसा जो इम्पोर्टेंट हो फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम परस्पेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स एयर पोल्यूशन पैनल फॉर फेलिंग टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके ओके, ये थोड़ा टेक्निकल है, लीगल इशू है, बट चलो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन फंक्शनैलिटी एंड एसेंशियलिटी टेस्ट टू क्लेम आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनीज से रिलेटेड है ये आर्टिकल। रियल एस्टेट कंपनीज को कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, कुछ एडवांटेजेस, फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलते हैं अंडर दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम, एंड ये कुछ क्राइटेरियाज पे मिलते हैं। बट अभी इसका थोड़ा सा मिसयूज भी हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट ले डाउन कर दिया, ट्विन टेस्ट है, फंक्शनैलिटी और एसेंशियलिटी। तो उन्होंने बोला है कि जो भी आप गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करोगे अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए, वो एसेंशियल होने चाहिए आपके बिजनेस के लिए, और वो फंक्शनल होने चाहिए टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस और आउटपुट ऑफ योर बिजनेस। आप में से अगर कोई बिजनेस फैमिली से होगा तो आपको पता होगा कैसे बिजनेस एक्सपेंसेस वर्क करते हैं, कैसे कुछ एक्सपेंसेस को एज अ बिजनेस एक्सपेंस दिखाया जाता है, जैसे लैपटॉप्स हो गया, कार्स हो गई।
तो उसी तरीके से एक तरीके से रियल एस्टेट कंपनीज के लिए एक टेस्ट है, फंक्शनैलिटी एंड एसेंशियलिटी टेस्ट। ये दो चीज़ें बस आपको याद रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जीएसटी एक्ट से रिलेटेड है एंड इज फॉर रियल एस्टेट कंपनीज। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि इफ अ बिल्डिंग क्वालिफाइज टू बी अ प्लांट, आईटीसी कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रेंटिंग और लीजिंग द बिल्डिंग। ठीक है, तो फंक्शनल भी है और एसेंशियल भी है। ठीक है, तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब और क्या क्या है यहाँ पे? Hezbollah's Intel headquarters hit as Israel's ground raids continue. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। यूके टू रिटर्न चैगोस टू मॉरिशियस इन हिस्टोरिक डील। चैगोस क्या है? चैगोस इज अ पीस ऑफ आइलैंड, पीस ऑफ लैंड, इंडियन ओशन में है। यूके का कंट्रोल था पहले इस पे, एंड मॉरिशियस की टेरिटरी के पास आता था ये। तो अब यूके जो है अपना कंट्रोल इस पे लीव कर रही है, मॉरिशियस को वापस दे रही है ये चैगोस। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। Historical political agreement to secure the strategically important UK-US military base in Diego Garcia and towards restoring Mauritius sovereignty over the Chagos archipelago. A treaty is now being worked out to firm up the agreement, UK announced. For the first time in more than 50 years, status of the base will be undisputed and legally secure. तो पहले इस पर डिस्प्यूट चल रहा था, मॉरिशस अपना क्लेम करता था, यूके अपना क्लेम करता था, फिर यूके ने अब अपना क्लेम वापस ले लिया है और यूके वाले अब एग्रीमेंट करके चैगोस आर्किपेलागो को मॉरिशस को वापस कर देंगे। क्या बात है, हमारा कोहिनूर डायमंड भी वापस कर दे लगे हाथ, सभी कर ही रहे हैं वापस। तो नेटो के चीफ गए हैं मार्करट यूक्रेन अपना सपोर्ट देने, सिर्फ बातों से ही सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग यूक्रेन को, और वेपन्स बेच रहे हैं अपने। इतना सपोर्ट होता तो नेटो में ऐड कर लेते, बट ठीक है, चल रहा है। ओके, T20 वर्ल्ड कप विमेंस का स्टार्ट हो गया। विमेंस क्या होता है? विमेन का स्टार्ट हो गया है, एंड मेक श्योर यू गाइस, अच्छा यू गाइस तो आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वरना आप लोगों को मैं बोलता सपोर्ट करो हमारी विमेन इन ब्लू को, बट हाँ ठीक है, दिल से सपोर्ट करो, मैच मत देखो, क्योंकि मैच में भी आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा जो कि कहीं और इन्वेस्ट होना चाहिए। और क्या है हमारे न्यूज़पेपर में इंटरेस्टिंग? और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। हम चलते हैं हम आज की मेंटी क्विज पे। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, वो कैब कर लेते हैं पहले जल्दी से, वो कैब कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है टॉकिंग फ्लुएंटली, रेडिली और इंसेसेंटली। इंसेसेंटली मतलब होता है बिना रुके, नॉन स्टॉप। टॉकेटिव, वर्बोस, गैरुलस, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वॉल्यूबल इज। ऑपोजिट हो गया साइलेंट, स्पीचलेस, क्वाइट। सेंटेंस हो गया क्लैरिसा वाज एक्सट्रीमली वॉल्यूबल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ गुड मैनर्स। लड़कियां होती हैं थोड़ा ज्यादा वॉल्यूबल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ गुड मैनर्स, लड़के थोड़े कम होते हैं। एनीवे, the next word is cognate. Cognate means having qualities in common. So sentences German and Dutch are cognate languages. Opposites are different, dissimilar, unlike. Synonyms are alike, analogous, or comparable. The third word is destitute. Destitute, sorry, not destitute. Destitute. Destitute का मतलब होता है without the basic necessities of life. हिंदी में बोले तो गरीब। Synonyms हैं इसके penniless, impoverished, impecunious. Antonyms हैं affluent, opulent, and rich. The flood left thousands of people destitute. Destitute का accurate translation गरीब भी नहीं होगा, इसका accurate translation होता है बर्बाद। ठीक है, so that is what destitute is, बिल्कुल बर्बादी। Then the second word is cognate, the third word is voluble. ठीक है, चलो। For Menti Quiz, for people who are new to the process, you have to go to the website called www.menti.com. वहां पे आपको पूछा जाएगा एक numerical code. This is the numerical code which is on your screen, 176026684. ठीक है, तो ये कोड जब आप डालोगे और फिर अपना नाम डालोगे तो आप पहुंच जाओगे क्विज पे। तो जल्दी से कर लो रजिस्टर एंड हम स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्विज। ओके, बीइंग रैप्सोडिक इज आस्किंग मी स्टेट इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्या? बस कौन इलेक्ट हुआ उतना जान लो, उतना काफी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू go very deeper into it, just get to know the basics कि कौन इलेक्ट हुआ, कौन सीएम बना, etc etc. चल, I'm giving you 30 more seconds. Let's register for the Menti quiz very quickly. I'll put down the code in the chat box as well. 17602684. You have to go to www
Menti.com. I'll share the screen as well. स्टार्ट कर दें? विनीश कह रहा है स्टार्ट कर दो, सबको आ जाने दो, सबके साथ चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसा मोदी जी कहते हैं और ये बात मुझे उनकी अच्छी लगती है। चलो, last few seconds for everyone to register. Has everyone registered? Let me see. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 players are ready to play. We have 27 people on the stream. So 10 सेकेंड में और वेट कर लेता हूँ for a couple of more people who might be in the process of joining us. I'll wait for 10 more seconds and then I'll start the quiz for the day. तब तक आप लोग अपने प्रेडिक्शन डाल दो जरा चैट बॉक्स में. What do you think? How many questions are you going to get right out of 15? 15 में से क्या 10 सही होंगे, क्या 12 सही होंगे, क्या 8 सही होंगे? What do you guys think before you start attempting the quiz? What is your speculation? क्विज आज का इजी है, ये मैं बता देता हूँ. इट इज इजी टू मॉडरेट टुडे. इनफैक्ट इजी ही बोलूंगा मैं आज के क्विज को, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा. ओके, दिविज सेज 12, श्वेता सेज 10, पायल सेज 10, आराधना सेज 8 to 10. ये तो रेंज हो गई, ये तो काफी बड़ी. दीप्ताक्षी is saying 10, रिद्धि is saying 11 plus, धृति is saying 8 to 10. चलो हम स्टार्ट करते हैं. We have 23 players live with us. Let's start our Menti quiz for Friday. Today is 4th of October. This is revision quiz for March. The first question coming up on your screen in 3, 2, 1, now. Easy peasy question to start with so that you guys can score खूब सारे points जल्दी से. Oh my God, ये क्या ब्लेंडर कर दिया आप लोगों ने. जेनीवा में नहीं है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, इट इज इन न्यूयॉर्क. ऑल्दो काफी सारे हेडक्वार्टर्स हैं जेनीवा में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही जेनीवा में हैं, कुछ कुछ न्यूयॉर्क में भी होते हैं. Okay, we have Elsa with the fastest response on the first position. Then we have Vihan, Mukti, Alankrita, Diptakshi, Puffy and Sonal. Vinish 8th standard. 8th standard का क्या मतलब है यहाँ पे? Okay, let's move to the second question. 23 players ready to play with me. The second question up on your screen in 3, 2, 1. Okay, interesting. Only 8 people got this correct. It's elephants. Wildlife Protection Act को amend किया गया था 2022 में, I think August 2022 में, to allow transfer and trade of wildlife animals, जो कि पहले बैन था. एंड ये क्यों किया गया था? ताकि जो कैप्टिव एनिमल्स हैं उनको भेजा जा सके, या फिर कोई स्टेट अगर केयर नहीं कर पा रहा तो दूसरे स्टेट उनको भेजा जा सके. एंड रिसेंटली मार्च 2024 में रूल्स बनाए गए फॉर ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स. ठीक है, चलो let's see who all got this right. Okay, Alankrita has taken a big lead, is on first position. Then we have Mukti on second, Diptakshi on third, Elsa on fourth, Steph with the fastest response on fifth. Then we have Vihan, then Divij, then Riddhi, then Agam, then Puffy. Okay, interesting. Question number 3, we have 1 new player, 2 new players, 25 players ready with us. Question, 4 new players. Kya baat. Question number 3 out of 15 up on your screen. ये तो हो गया rhyming.
Ciao. Okay. This इंडिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर in तारापुर. तारापुर is in Palghar. Palghar is in Maharashtra. And that is the right answer. इस साल न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी सबसे पहली. कहाँ हुई थी? ब्रुसेल्स में हुई थी. चलो, इट्स नॉट कुंडकलम. Okay, I can see a lot of variations which are going to happen on the leaderboard. Yes, Mukti is now on first position. Then we have Deeptakshi on second, Alankrita on third, Vihan, Riddhi, Divij, Vinish, PK the fastest has come up on leaderboard. Then we have Elsa and Steph. So with every question, we have a new leader on our leaderboard. Let's see if that is the trend for question number four as well. Question number four is coming up on your screen any moment now. Okay, majority of you knew this. India's first integrated oil palm processing unit recently started its commercial operation in Arunachal Pradesh. The name of the place is Rowing in Arunachal Pradesh. ठीक है, क्या बात है. चलो, बढ़िया. You guys are picking up some form now. Okay, again we have a new leader for this particular question. Deeptakshi is on first now. Riddhi has climbed up the spots very quickly and is now on second. Then we have Mukti, Divij, Elsa the fastest again. And then Vinesh, Steph, Alankrita, Vihan, and Agam is now on the leaderboard as well. Question number five. 27 players are ready to play with me. Let's go for question number five. Coming up on your screen in three, two, one. सखी ऐप किसने बनाया है? लास्ट वाले ऑप्शन में टाइपो हो गया है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर होगा वो पूरा ऑप्शन. ओके, मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस रॉन्ग. इसरो ने नहीं बनाया है. दिस इज मेड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. नॉट डीआरडीओ, नॉट एनएसआईएल, नॉट इसरो. वीएसएससी ने बनाया है. ओके, फिर से नया फर्स्ट पोजीशन पे नेम. मुक्ति इज अगेन ऑन फर्स्ट पोजीशन. दीप्ताक्षी इज ऑन सेकंड. एल्सा ऑन थर्ड. स्टेफ फास्टेस्ट ऑन फोर्थ. देन रिद्धि इज ऑन फिफ्थ. देन अगम, दीवेज, विनेश, अलंकृता एंड विहान. ऑलराइट, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है आज का क्विज. हर क्वेश्चन के साथ हमें नया लीडर मिल रहा है ऑन द लीडर बोर्ड. क्वेश्चन नंबर सिक्स. लेट्स सी इफ यू कैन बी द वन हु इज ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्स. ओके, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए विशाखापट्टनम से. द नौसेना भवन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली. दिल्ली कैंट एरिया में बना है. न्यू दिल्ली में इंडियन नेवी का पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स. ओके, लेट्स सी. Oh, major changes on the leaderboard. Riddhi was the fastest for this question. Mukti is still maintaining her lead and on the first position. Now Steph is on second position. Deeptakshi is on third. Riddhi is on fourth. Agam, Divij, Elsa, Alankrita, Puffy, Vinish are the other people on the leaderboard. Very close competition happening today. We are almost halfway into the quiz. Question number seven. 27 players are ready to play with me. The next question coming up for you in three, two, one.
Okay, many of you knew this. This is a word of Creole language. सेशल्स की जो लैंग्वेज है वहाँ पे क्रियोल बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है एंड इंग्लिश बोली जाती है. क्रियोल इज देयर नेटिव लैंग्वेज एंड वहाँ का वर्ड है लामिथिए. इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप. एंड इंडिया और सेशल्स के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. बाकी जो तीन ऑप्शंस थे वो भी अफ्रीकन लैंग्वेजेस ही थी बट नॉट द करेक्ट आंसर. Arey wow, we have a new person on the top of the leaderboard again. Steph is now on first position. Riddhi was the fastest and has climbed to second position again. Deeptakshi is on third, Mukti is on fourth, Agam is on fifth, Elsa, Dive, Jalankrita, Puffy, and PK are on position 6 to 10. Question number 8, 26 players are ready to play. Let's go to question number 8 coming up on your screen now. तो मुझे हाइती के प्रेसिडेंट का नाम बताना है जिनका असैसिनेशन हो गया था 2021 या 22 में. उनका नाम है जोवेनल मॉइस. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन इंद्रावती. 8 लोगों ने तुक्का मारा है गलत ऑप्शन के लिए. Okay, once again, Steph has maintained the lead. This is the first time a person has stayed on the leaderboard in this quiz for two consecutive questions. So good job there. Steph was the fastest. Then we have Deeptakshi on second, Agam on third, Elsa, Riddhi, Mukti, Devij, Puffy, PK, Alankrita on the leaderboard as well. Let's move to question number 9. बहुत ही intense competition हो गया है आज के quiz में. Let's see who can come up on the leaderboard and who can take up the top three positions. Okay, majority of you knew this question. It's Saudi Arabia, which is on second position. I think third पे कतर है, fourth पे यूक्रेन है, and पाकिस्तान भी top 5-6 में ही है. Yes, Saudi Arabia is the right answer. Okay, Steph is still maintaining his or her lead. I don't know the exact name. And then we have Deeptakshi, Elsa, Riddhi, Mukti, Agam, Divij, Puffy, PK, and Alankrita. Riddhi was the fastest for this one and is on fourth position. Question number 10, 27 players playing with me. Coming up on your screen in 3, 2, 1. Okay, majority of you knew this. It was hosted by the government of Cameroon along with WHO to address malaria. The declaration is Yaoundé Declaration. 11 African countries signed this declaration. Okay, Riddhi was once again the fastest for this question. Steph is still on first. Then we have Elsa, Riddhi, Deeptakshi, Mukti, Agam, Divij, PK, Vinish, and Puffy. Let's move to the final segment, the last 4 5 questions of the quiz. Question number 11 coming up on your screen. In 3, 2, 1. Okay, almost majority of you got this correct. It was Divyastra, Mission Divyastra, where we tested the Agni 5 intercontinental ballistic missile with the MIRV technology, which can hit multiple targets with multiple payloads, and the official name was Divyastra. Absolutely correct. Intense competition on the leaderboard.
We have Steph on the first position. Riddhi is now on second with the fastest response. Deeptakshi is on third. Mukti on fourth. Very tough competition in the first four positions. Then we have Elsa, Divij, Agam, PK, Puffy, and Alankrita. Okay, 27 players ready for the question number 12. Let's go for it. Question coming up on your screen any moment now. इजी क्वेश्चन है ये तो. देखते हैं कौन सबसे जल्दी इसके मैक्सिमम पॉइंट स्कोर कर पाता है. 18 people, a overwhelming majority of you got this correct. इट इज़ द मूवी पुअर थिंग्स. 96th अकेडमी अवार्ड यानी कि पिछले साल के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला था एमा स्टोन को. ओपनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे. किलियन मर्फी को मिला था फॉर बेस्ट एक्टर. मूवी का भी ओपनहाइमर को मिला था. एंड पुअर थिंग्स के लिए मिला एमा स्टोन को. एमा स्टोन को इससे पहले भी ऑस्कर मिल चुका है, अकेडमी अवार्ड मिल चुका है फॉर द मूवी लाला लैंड. बेस्ट एक्ट्रेस वो लाला लैंड के लिए भी जीत चुकी है. बट दैट वॉज नॉट द 96th अकेडमी अवार्ड. 96th वाले में पुअर थिंग्स इज द नेम ऑफ द मूवी. ओके, इंटरेस्टिंग. सबने बहुत जल्दी जल्दी दिया ये वाला रिस्पॉन्स. रिद्धि वॉज द फास्टेस्ट, क्लोजिंग इन बट स्टिल ऑन सेकेंड पोजिशन. स्टेफ इज स्टिल ऑन फर्स्ट, मेंटेनिंग द लीड. Mukti and Deeptakshi closing up on third and fourth very intensely. Then we have Divij, Agam, Elsa, PK, Puffy, and Shania is now on the leaderboard. New name, welcome on the leaderboard. Let's go to question number 13. 26 players are playing with me. Question coming up for you on your screen now. Okay, 16 people got this right. It's Iris, developed in Thiruvananthapuram, Kerala. All the other three names are also AI robots, which are developed in India. But I asked you the AI based teacher robot, which is Iris. It's a female robot. Okay, very fast responses on the leaderboard. Puffy was the fastest for this question. Steph is still on the first position. Riddhi is on second. Mukti and Deeptakshi. These four people are not willing to leave their places. Same for Divij on fifth position. Then we have Agam, Elsa, Puffy, Shania. And Sai is now on the leaderboard. New name, welcome. Chalo, let's go to the second last question of the quiz. This is your chance to get some gains in your ranking and points because the last question is an easy question that I remember. I don't remember if this one is an easy question, so let's go for it. Question number 14 coming up on your screen now. Okay, this is a moderate question. This is not an easy question. Only seven people got this right. So all these four people in the options are famous architects from India, but only B.V. Doshi has won the Pritzker Architecture Prize. His full name is Balkrishnan something Doshi, and he won it in the year 2018. Okay, let's look at the leaderboard. Okay, I think Steph has taken an unconquerable lead now with the fastest response. Then Riddhi is on second, Mukti is on third, Divij is now on fourth, Agam is on fifth, Deeptakshi has taken a hit and is down on position six, and we have Elsa, Shania, PK, and Puffy. Okay, the last question. This is an easy question, so be very fast and try to answer it correctly. 25 players. The last question of today's Menti Quiz on your screen now.
15 people got this right. It's called the blue line. Red line नहीं बोलते उसको, blue line बोलते हैं. The border between Israel and Lebanon. It's not an international border. It's more of a demarcation line made by the United Nations, and it's called the blue line. Okay, Riddhi had the fastest response with Elsa, and Steph is the winner for this quiz. What's your real name, Steph? Please tell us in the chat box so that we can congratulate you. But for now, congratulations to Steph. Very fantastic performance today, and equally good performance by all the other people on the leaderboard: Riddhi, Mukti, Deeptakshi, Devij, Agam, Elsa, Shanaya, Puffy, PK, and all the other people who featured on the leaderboard, and all the other people who participated in the quiz as well. You guys performed terrific today. Very good performance. Very happy with your performance today. Okay, who was Steph? We need a reveal. Okay, Aradhana was Elsa. A bit disappointed. It's okay. Steph कौन था? Can I get to know who was Steph so that I know who won the quiz? Okay, Ashim is saying I was Steph. Okay, I would believe you if you say that. So congratulations to you. Did you guys exceed your expectations which you had put it in the chat box, or did not meet them, or were you at par, less than your expectations, equal to your expectations, or more than your expectations? How was your performance? Congratulations, Ashim. Okay, Vinish ने spam कर दिया हमारा chat box. Need more time लिख के. I think Vinish, you were the one who सबसे पहले said कि start करो. So ये तो क्या बात हुई? Suryan is saying Vinish forgot in the chat. Funny. Okay. Riri is saying good sources to cover GK backlogs other than newspaper, Manthan or Manthan 2.0. I would suggest start with Manthan and supplement it with Manthan 2.0. ठीक है. Congratulations to everyone who participated, and I hope you guys enjoyed today's quiz. Divij is saying equal again, got 3 wrong. Aradhana is also equal. Dhriti is saying less than expectations. What about others? Scored more than expectations, less than expectations, equal to expectations, more than expectations. Deeptakshi, that's good. Good for you. Divij is saying, will the timings of the class change? They might change from the next week. इस week तो यही रहेंगी. But from the next week, you might see a change in timings. I'll notify it to you. Okay. Which months did this quiz cover? It was March based. It covered news from the month of March 2024. Okay. Riddhi scored more than her expectations. That's good. चलो next quiz, Tuesday का quiz आपको किस topic पे चाहिए या किस month पे चाहिए? Should we do April for the Tuesday quiz? Are you guys up for it? Give me a yes if you are up for the month of April for Tuesday's Menti Quiz. Yes, if you want April for Tuesday's Menti Quiz. If no, then what is your suggestion? Ashim is saying more than expectations because in last quizzes I was on second or third. Yes, I remember seeing you on the leaderboard in a lot of quizzes, but it's good to have your name as well. So very well played, Ashim. Proud of you. ठीक है, यस आ गया है सबका. तो अप्रैल की तैयारी कर लीजिए, तैयार, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और किताबें खोल लीजिए और नोट्स उठा लीजिए, क्योंकि ट्यूसडे का अप्रैल का मेंटी क्विज होने वाला है मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ठीक है, इजी नहीं रखेंगे उसको, इजी में आप लोग सारे क्वेश्चन सही कर देते हो. ठीक है, तो मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ रखेंगे फॉर द Tuesday quiz, which is on the month of April. आज आपका 8 बजे है strategy session with me and Amitendra sir, last 2 months strategy. So make sure all of you all of you attend it without fail. And I'll see you again on Monday in another Hindu analysis. Before that, I'll see you today at 8 p.m. Till then, signing off. Take care, keep learning, keep preparing. Bye-bye.